Hello everyone. This is the course for Art of Conversation, understanding what is conversation, and this is a foundation course which I'm starting. We will go module by module in this, and मैं आपको real world scenarios के हिसाब से I will teach you the art of conversation, how to talk to people, and how talking to people can help you build connection, can help you influence people. Also, आपके लिए it will give lot of opportunities in business and so on and so forth. Right? So be aligned with this course. We will cover most of the aspect of human behavior, psychology, and also conversation. Conversation would be the center point of it, so that you don't struggle in talking to people, making relationships, building business relationship, growing in your job, growing in your career, and so on and so forth. Right. So first of all, let's understand why conversation still matters. Why in the world today, conversation is so much an important skill. So we all know that we live in a world of automation, human connection is a superpower. So basically, what happens is that there are so many AI tools, chatbots, and हर चीज के लिए एक सॉफ्टवेयर है काम करने के लिए. But then people are missing out on human touch, which is there. So definitely, अब वो human touch से क्या फायदा होता है? What is that touch brings to the people? So basically, a good conversation skill will always help you in building trust with the person. तो अगर आप अच्छा ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते, आप कॉन्वर्जेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि यू विल नॉट हैव टाइम, ही दैट अदर पर्सन विल नॉट गिव यू टाइम टू इवन टॉक. देन हैविंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ समवन एल्स. सो एम्पैथी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉन्वर्जेशन में एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो कोलैबोरेशन, which AI tools, bots, chatbots और ऐसे voice assistants, मतलब जो भी AI से related चीजें हैं, they don't help in this, right? So also conversations are a foundation of sales leadership, networking and personal growth. तो अगर आपको अपने सेल्स में करियर अच्छा करना है, आपको डील्स ज्यादा क्लोज करनी है, आपको you want to bring more business to your organization, or you work as a sales professional, conversation as a skill becomes very important. लेट्स कम टू लीडरशिप. सो लीडरशिप में आप देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, या इफ यू सी एनी अदर लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स ऑफ नेशन, इफ दे आर नॉट गुड इन कॉन्वर्जेशन, वो अपने आइडियाज, अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं बता सकते. नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज बेसिकली अमाउंट ऑफ पीपल यू आर कनेक्टेड टू, whom if you reach out, वो आपको काइंड ऑफ दे हेल्प यू इन समथिंग. तो अगर आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स आर नॉट गुड, डेफिनेटली यू विल हैव much less of a network. Connecting with people would be a challenge for you. Then also personal growth. अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, if you're good in convincing people, आपकी लीडरशिप अच्छी है, तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू अ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, राइट? So the psychology of connection. So understand what is the psychology of connection, how connection is built. कनेक्शन कैसे बनता है लोगों को? तो जब भी आप किसी के साथ बैठेंगे, अगर उसको ऐसा लगेगा कि when he or she talks to you, he feels seen, ऐसा लगता है, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ, he is looking at me, he feels heard, उसको लगता है कि ठीक है, ये मेरी बात भी सुनता है, और बात सुनने के बाद he or she also understands what I'm saying. तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. उसके लिए एक फिजिकल प्रेजेंस होना भी जरूरी है, उसकी बातें सुनना भी जरूरी है, और उसकी बातों को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, राइट? सो अंडरस्टैंड. Mirror neurons help us emotionally sync during conversation. So I would say like mirroring, which will definitely will come to it in detail little bit later, but kind of understand कि आप देखिए कि जैसा सामने वाला बिहेव कर रहा है, वैसे ही आप बिहेव कर रहे हैं उसके साथ में, तो उसको लगता है सिंक्रोनी बन गई है, मतलब एक साथ में आप जेल वेल कर रहे हैं. एंड ऑल्सो एम्पथी एंड क्यूरियोसिटी. एम्पथी मतलब कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाते, दूसरों के इमोशनल सिचुएशन को समझना. एंड क्यूरियोसिटी विच इज
दैट अगर उसको लगता है कि ओके यू आर एन इंटरेस्टिंग पर्सन, सो दिस इज अ फ्यूल ऑफ कनेक्शन, आपकी वो कनेक्शन को बिल्ड करेगी, राइट? सो ओके, सो व्हाट आर द ग्रेट पिलर्स ऑफ कॉन्वर्जेशन? कॉन्वर्जेशन के पिलर्स क्या होता है? फर्स्ट इज प्रेजेंस, आपका फिजिकली प्रेजेंट होना, या फिर इवन इफ यू आर ऑन अ कॉल और ऑन अ वीडियो चैट और समथिंग, योर प्रेजेंस मैटर्स, हाउ यू आर मेंटली एंड इमोशनली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स। कभी कभी क्या होता है, हम ऑलमोस्ट वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, बट हमारा दिमाग कहीं और होता है, वी आर इमोशनली समवेयर एल्स। सो इमोशनली अवेलेबल होना और मेंटली प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Also listening, listening is a very important part when it comes to conversation. So listening is not only listening to the words, but also listening to the feelings and emotions of the person. Then we come to curiosity. So understand anything, अगर किसी के अंदर आपको जानने की या आपकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, why he or she will talk to you? This is a big question. So what is curiosity? Understand, it is something that a person wants to know about you, or about you in general, or let's say about what you do, what you, what kind of person you are. So definitely curiosity is something which kind of fuels the conversation, it builds interest, right? This is also part of attraction. So definitely male to female attraction comes, female to male attraction comes, curiosity is a very important thing. ठीक है? एम्पथी, एम्पैथी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, आल्सो वैलिडेटिंग अदर्स पीपल, एंड देन क्लैरिटी, हाउ क्लियर आर यू in expressing your feelings and emotions to other people, and your words, how clear are you in terms of. So these are the core pillars of a great conversation, right? So let's understand कि conversation is you speaking and also you listening. So what is the difference between listening and hearing? So hearing is actually passive, मतलब आप बस सुन रहे हैं, कुछ वर्ड्स आए वहां से, उसने कुछ बोला, ठीक है आपने सुन लिया, ओके ओके, नथिंग स्टिक्स, ओके ठीक. But then active listening is something which you kind of listen to each and every word. आप उनके इमोशंस को समझते हैं, आप उनके रिस्पॉन्स को देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को काइंड ऑफ सी. So the pro tip is to understand, you have to listen. To listen समझने के लिए, to understand, not to reply. अगर आप अपना रिप्लाई ऑलरेडी रेडी करके रखने बोलना चाहेंगे, this would not come as a good listening or hearing skill, right? So everyone wants कि हमारी कॉन्वर्जेशन, हम जब किसी से बात करें, हम मेमोरेबल रहे, हमें वो याद रखे. इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कि हम फ्यूचर में ठीक है इससे बात कर सकते हैं, मे बी यू मे हैव एनी पर्सनल रीजन. तो व्हाट इज इट दैट मेक्स अ कॉन्वर्जेशन मेमोरेबल? सो इमोशनल रेजोनेंस. सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट आपकी वाइब कितनी मैच कर रही है. अगर आपकी वाइब मैच करती है, that will build a very memorable moment for that person. And vibe कैसे मैच करेगी? जब आप present होंगे, you kind of understand, empathize with people. Also, when you are actively listening, understanding their body language, they feel heard. This is what is the core of emotional resilience. When you share stories and laughter, तो आजकल if you see social media के आने के बाद, people are not very happy, people are struggling with their emotions, people are struggling with whatever they have. So I think that if you can make someone laugh, definitely he will or she will keep you in mind, definitely, right? Feeling valued and understood. So definitely, yeah, valued. If someone is speaking to you, they think that okay, this person is listening to me, actively listening to me, and is understanding what I'm saying. It's not he's just listening, he's actively listening to that, makes the person feel valued. And a सेंस ऑफ फ्लो. सेंस ऑफ फ्लो इज बेसिकली कि स्मूथ कॉन्वर्जेशन है, एंड इट एंड्स ऑन अ गुड नोट. ऐसा नहीं कि कोई ऑकवर्डनेस है. अगर ऑब्वियसली आप कोई ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन है, कुछ गलत बात कर रहे हो, डेफिनेटली दैट विल नॉट हेल्प यू टू मेक अ कॉन्वर्जेशन मेमोरेबल. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड सम बैरियर्स टू द कनेक्शन. आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ऐसा क्या होता है कि
जो वो कनेक्शन स्टॉप हो जाता है, या इट काइंड ऑफ अ बेसिक डिस्ट्रैक्शन विच इज यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन। आपके सामने कोई बैठा है, कोई अपनी बात बता रहा है, अपना फोन चला रहा है, डजंट। और इफ यू आर मल्टीटास्किंग, लैपटॉप भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ not present over there. So presence is more important. I would say distraction is something, but distraction का मतलब presence है. If you're very self-centered, you are too about yourself, too about me, myself, and everything. Obviously, that won't make other people it will not make other people hurt. It will not feel that ठीक है ये आदमी this particular person is listening to me. Okay, a lack of curiosity. Definitely, if you're not curious, ends the conversation there and there. And if you do not have any follow-up questions. So let's say there is a conversation that you're having, right? अगर आप you you are talking about, let's say, a memorable trip that you guys had, right? And you don't have any particular follow-up questions, and you don't ask any question as such. Just you listen, and then आप curiously उससे कोई question नहीं पूछते हैं. I don't think that would be a very big way, a very a proper conversation that would happen. And also fear of judgment. If you think that okay, people will judge you, you will overthink, you will not talk, you will not reach out. So definitely, if you don't take action, nothing is going to work, right? So here are some quick wins that you can put instantly, ताकि आपकी conversations लोगों के साथ improve हो. तो जब आप किसी से बात करें, use their name, call people by their name between sentences. आप उनके नाम को बुलाओ. आप you take their name again and again, not very like too much, but after 4 5 sentences या कभी भी जब भी आपको लगे, just touch upon their name, एक बार उनका नाम दो, ताकि उससे एक इमोशनल कनेक्शन जनरेट होता है. पीपल आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर नेम, राइट? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. सो rather than just asking a yes or no question, ask a question. Okay, let's say trip का example लेते हैं. So if you kind of went on a trip or something, you can just ask, okay, so what is that particular thing that you loved about the trip the most? So then that is an open-ended question. He or she will try to express herself. वो अपनी चीजों को बताने की कोशिश करेगा और बताने की कोशिश करेगी. And that person will try to explain you the emotions, the memories that they have, right? Yeah. Okay. So also practice yes and. So whenever they say okay, something they kind of put okay, you say yes, and what is it? Other follow-up question. कुछ आप उनसे और question पूछ सकते हैं. Also you can tell them about your experience. It should not be only about question, but also you kind of build the conversation. Mirror tone and energy. So basically, I would say that tone is something जिसके बारे में हम tonality के बारे में हम पढ़ेंगे कि there is a different way of you say hi, hi, hello, hello. So you understand. So एक tonality होती है conversation में that will be other, but kind of try to match their tone a little bit. एक synergy of energy आप बनाने की कोशिश कीजिए. Right. So, where you can apply this, definitely networking event. If you're on a sales call, you can apply this on cold outreach, team meetings, and day-to-day life में आप इसको apply कर सकते हैं. Right. So, what you can do, what's next for you? So, conversation is a learnable skill. If you think that it cannot be learned, this is something that you can learn on your own. It's not a very hard skill to learn. It just takes practice like you know any other person. You can practice this with your clients if you are in corporate. आप अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करके देख सकते हैं. इवन यू कैन टॉक टू स्ट्रेंजर्स. सो फॉर स्ट्रेंजर्स आई वुड से स्मॉल कॉन्वर्जेशन would be more than enough. Maybe you just hit like talk about like a one or two things. It will help you kind of warm up a little bit. Okay. So in the next module, we will discuss about starting a conversation with confidence. आप कैसे किसी के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस का बहुत इशू रहता है. कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच काइंड ऑफ हेल्प्स यू यू नो मेक द कॉन्वर्जेशन मच बेटर. आपके जो फियर ऑफ रिजेक्शन है उसके बारे में भी वी कैन टॉक. So stay tuned on this particular course.
This is a very organic course which I've created, not a very, highly videographic kind of content. But this is, I would say, the most organic way to teach something to someone, right? So stay tuned on this particular course. See you in the next video.